Hello, students. Hello. Hi, everyone. Hi, this is Maitree Shandalya, third year electrical engineering undergrad from IIT Delhi. And I'm so glad to be here with you all today. I hope you guys are excited for today's session. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं. तो आप सबका रिजल्ट आ चुका है. हाउ वाज द रिजल्ट गाइस? हाय कुणाल, हेलो. हाय शगुन, हाय करण, हाय हर्षद. Hi, Sapna. Hello. Hi. Boss Velocity. That's a really nice name. Hi, Ayan. So the results for JEE mains and advance are both out. So कैसा हुआ आप लोगों का रिजल्ट? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अपना रिजल्ट किसी को पसंद नहीं आता. रिजल्ट हमेशा बाकियों का ही पसंद आता है. बीट आपकी रैंक 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जो भी रैंक हो आपकी. तो आप लोगों का रिजल्ट कैसा हुआ एंड हाउ इज द सीट फिलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन गाइस? हाय विकी, हाय शगुन, हेलो. हाउ इज द सीट फिलिंग गोइंग ऑन फॉर यू गाइस? काफी ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन होंगे, बहुत ओवरवेलमिंग सा प्रोसेस लग रहा होगा. जेई के बाद एक नया स्ट्रगल सा लग रहा होगा. है ना, कंफ्यूजन तो है. उत्सव सबको कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हैं. उत्कर्ष को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है स्टेट से ड्यू टू सम रीजन. ओके. चलो, तो फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली आज का सेशन पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं. a little bit of who am I. So, hi guys, this is Maitree Shandalya. I'm a third year electrical engineering undergrad from IIT Delhi, and I was a part of the Eklavya batch at Vedantu in 2020. And I'm really glad to be here with you guys today. एंड आप आज जहाँ हो, मैं 2 ढाई साल पहले वही थी. सेम कंफ्यूजन से मैं भी गुजरी थी, सेम चॉइसेस मैंने भी बनाए थे. या सो ठीक है, आज एक एक करके. सो बेसिकली
I'm from IIT Delhi and second year में मैंने people are asking about little bit about my internship. So yes, second year में मैंने Google में intern करा था and third year में I'm going to intern at Microsoft. So yes, I'm here to talk about all the opportunities you get once you get into the college. पर उससे पहले हम बात करेंगे कि कॉलेज घुसने से पहले डिसाइड कैसे करें कि कौन सा कॉलेज लें, ब्रांच कितना मैटर करता है, कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए ब्रांड नेम को या फिर ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, और किस रैंक पे कौन सा कॉलेज और ब्रांच बेस्ट रहेगा, और ऐसी कई सारी डाउट्स जो बच्चों को इन जनरल एडवांस देने के बाद और कॉलेज घुसने से पहले होती है, वो हम उस पे बात करेंगे। एक एक करके आप अपने डाउट चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, चैट सेक्शन में देख रही हूँ। राइट, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन विल फोकस अ बिट ऑन सुपरन्यूमनरी सीट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर फीमेल एट आईआईटीज। तो पहले मैं थोड़ी बात कर लूंगी इस पर एंड उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं कि सुपर न्यूमररी सीट्स है क्या और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। सो बेसिकली पहले विदाउट दीज रिजर्वेशंस फॉर गर्ल्स, पहले द रेशियो, जेंडर रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन दीज कॉलेजेस, द टेक कॉलेजेस स्पेशली इन आईआईटीज एंड एनआईटीज यूज्ड टू बी 1:10 और 1:12 एंड दिस वाज आल्सो वेरी ब्रांच स्पेसिफिक। बहुत सारे ब्रांचेस में लाइक मैकेनिकल एंड सिविल ऐसा होता था कि लड़कियां होती ही नहीं थी, it was all male dominated, right? So this got, over time this got international attention and then people were called in, and इसके पीछे बहुत सारे, आपको पता होगा कि बहुत सारे reasons सामने आए। Girls generally did not prefer engineering as a career path, they instead chose maybe medical or maybe teaching or other चीज, but tech में नहीं आ रही थी। So to promote the girls and to balance the gender ratio in the campus, right, supernumerary seats आए एंड बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ? 2018 में 14% ऑफ द सीट्स was created supernumerary for women. The ratio went to 17% in 2019 and in 2020 20% of the seats, और 20% पे इसको फाइनली फ्रीज किया गया। अब बात ये आई कि were the boys affected because of this reservation? So supernumerary seat is different from reservations. How? अगर बंदों के पहले 100 सीट्स थे और बंदियों को 20% सुपर न्यूमनरी रिजर्वेशन मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि 20 गर्ल्स एंड 80 बॉयज। इसका मतलब है द बॉयज विल स्टिल रिमेन एट 100 सीट्स, 20 extra seats will be created which will be reserved for women. So now total number of seats become 120. So trust me guys, once you get into the campus, आपको पता चलेगा कि even the boys, you know, are not, you know, have not been compromised because of this reservation, but instead और ज्यादा balanced gender ratio से overall environment काफी ज्यादा improve हुआ है। Also now in branches which were earlier considered to be basically male dominated, अब वहाँ पे लड़कियां भी हैं and they are performing very well. And now people are actually choosing engineering as a career path for their daughters, and you know a lot of advantages जो हमारे साथ supernumerary seats के साथ attached है वो आए हैं। You know, we as a society are creating a lot of awareness about women in tech, right? So ये थी supernumerary seats की बात। तो आगे जाके मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि यू नो देर आर बिन सम कॉमन क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जा रहे थे। सो the first question which was asked was branch versus college. कैसे डिसाइड करें कि ब्रांच कौन सी ले एंड कॉलेज कौन सी ले? ओके, सो I'll give a very simple answer to this question. It will depend basically on your future goals. ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन योर फ्यूचर गोल्स। अगर आप श्योर हो कि आगे जाके आपको प्लेसमेंट में जाना है या फिर यू नो यू हैव टू अर्न मनी, टेक जॉब एंड एवरीथिंग, द ब्रांचेस यू शुड प्रेफर आर CS, MNC एंड इलेक्ट्रिकल। अगर ऐसे में अगर so that you know you the tech jobs are open for you and your courses are aligned for these tech jobs, right? अगर आपका फोकस मेनली प्लेसमेंट है तो आपके लिए ब्रांच शुड मैटर मोर देन द ब्रांड नेम ऑफ योर कॉलेज।
लेकिन अगर आपका फोकस हायर स्टडीज है, या फिर आपको एमबीए करने बाहर जाना है, या आपको रिसर्च करने बाहर जाना है, या फिर आपको कैट देना है, यूपीएससी देना है, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन द ब्रांड नेम ऑफ योर कॉलेज मैटर्स मोर देन द ब्रांच यू टेक. Correct? For example, like if for example UPSC में अक्सर बोला जाता है, I'm not very sure about UPSC, but still हाँ, if you are into UPSC, certain branches like civil engineering etc help you a lot. And if you want to go into research, or you want to go for MS or for PhD, then the brand name of your campus matters a lot. So basically, to choose between branch and college, you have to see what aligns the best with your future goal. Correct? And there are also certain things which I would like to highlight. Firstly, at the end of the day, it does not matter much कि आप कौन से कैंपस से हो या फिर कौन से ब्रांच में हो. At the end of the day, आप जहां भी जाओ, आपको पढ़ना पड़ेगा. You have to labor hard. हाँ, अगर आप मे बी सीएस में हो, या फिर इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर एमएनसी में हो, और तो फिर आपको अलग से ज्यादा मेहनत कोडिंग वगैरह के लिए नहीं करनी पड़ेगी. राइट? वो आपके कोर्सेज में ही आते जाएंगे. प्लस आपके लिए बहुत सारी कंपनीज ओपन रहेंगी. करेक्ट? यही अगर आप दूसरे ब्रांचेस में हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे. बट देन अगेन, इफ यू वर्क हार्ड, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. इट्स जस्ट, वो अभी आपको बहुत बड़ा डिसीजन लग रहा होगा कि क्या ले क्या नहीं ले. 5 years down the line, it won't matter much. Wherever you go, you have to work hard and you can achieve whatever you want to achieve. राइट? सो ये थी ब्रांच वर्सेस कॉलेज की बात. बाकी अगर आप में से किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है कि इस रैंक पे क्या होगा, या फिर इफ यू हैव सर्टेन चॉइसेस जिसमें आपको कुछ ऊपर नीचे प्रेफरेंसेस फिल करने में दिक्कत होगी, देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई टू दैट. करेक्ट? सो आई पॉज अबाउट over here to see if there are any questions. I think, ma'am, please help in what could you be a bit more specific? Okay, yeah, I see one doubt. He's a junior. How to manage class 12 and JEE? So let me jump in and tell you that boards के लिए आपको starting से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. You can just, जो boards आने वाला होगा, just then you can set aside 1 to 1.5 months and you can pass very comfortably. और अगर आप अच्छे कॉलेज में घुस जाते हो या फिर एनीवेयर, तो 12th के मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते, एज लॉन्ग एज यू आर चूजिंग इंजीनियरिंग. अगर आप साइंस या फिर मतलब अगर आप कॉमर्स या फिर लॉ वगैरह चूज करते हो, देन योर 12th रिजल्ट्स मैटर. सो प्राइमरीली फोकस ऑन जेई. एंड जब बोर्ड सामने आएंगे, देन जो आपके इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, प्लस आप जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो, मेरे टाइम पे फिजिकल एजुकेशन था, ये आपको पढ़ना पड़ता है. अदरवाइज पीसीएम की तैयारी तो आपकी जेई से भी हो जाती है. कितने पीडब्ल्यू रैंक पे टॉप 10 आईआईटीज में सीएस मिलेगा, मैम? ओके, दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन. एनी आइडिया? सॉरी. हाँ, पीडब्ल्यू रैंक, पीडब्ल्यूडी रैंक. राइट. सो बेसिकली आई गेस, अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक 10,000 तक भी है, इवन इफ इट्स स्टिल 10,000 और 12,000, and you belong to the PWD category, you can end up getting CS in pretty good IITs. Okay, ma'am, tell me, I want IIT Bombay. How much percentile should I achieve? Okay, so IIT Bombay, maybe it depends ki which branch do you want to enter, right? I mean, it depends a lot on that. सो अगर सीएस है फॉर एग्जांपल, तो 60-70 पे क्लोज हो जाएगी. इलेक्ट्रिकल है तो इट विल क्लोज अराउंड 250. एंड ऐसे टिल, इफ यू हैव, इफ अगर ऐसा है कि यू वांट दैट ब्रांड नेम ऑन योर सीवी, कुछ भी करके यू हैव टू एंटर बॉम्बे. सो आई गेस बॉम्बे एनवायरमेंटल एंड एवरीथिंग क्लोजेस अराउंड 4 to 5,000. Yes, 4,000 basically. Okay, NIT or abroad college? I mean, which abroad college है?
How to be motivated for long time. Utkarsh, now that's like how to be motivated for long time is just like how much attached you are to your target. That's the only thing. I mean, visualize yourself living your dream. Maybe at IIT, enjoying yourself. Watch. I used to watch a lot of IIT campus videos on YouTube. टॉप एनआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? टॉप एनआईटी में जाने के लिए कितने, नाउ टॉप एनआईटी में जाने के लिए आई गेस यू हैव टू स्कोर कितना परसेंटाइल? इट हैज टू बी एटलीस्ट 99 परसेंटाइल फॉर टॉप एनआईटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? या, सो दैट इज अराउंड 10,000 रैंक, which would bring me to around 200 marks, so for sure out of 300 in JEE mains. Hi Ruchi, hello. How to deal with backlogs? Okay. So backlogs के लिए what you have to do is weekday पे तो classes होती है, weekend पे try to cover the backlogs, and obviously to cover the backlogs you have to prepare a proper schedule. एक पूरा रूटीन बनाना होगा कि किस दिन क्या खत्म होगा, उससे you can deal with the backlogs. Now to some of the ways to study effectively, I would say is firstly to switch off your phones while studying, at least while studying. Secondly, most of my friends here and including myself, we used to do a lot of meditation work and everything. And basically, it is like maintaining targets and achieving them on a daily basis. कि आज इतना करके ही सोना है, and then actually doing that helps us to study काफी ज्यादा effectively. I am weak at chemistry. What should I do? Chemistry के लिए firstly cover NCERT is the Bible. So NCERT रट लो. एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो और आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो अगर एग्जाम पास आ रहा है तो अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रीम. बट अगर अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम है तो फिर गिव एक्स्ट्रा टाइम, आई मीन 50% ऑफ द टोटल स्टडी टाइम, गिव द इट टू दैट वन सब्जेक्ट. ओके, पीडब्ल्यू डी, आई आई, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी में कोई भी आईआईटी में सीएस कितने लोएस्ट रैंक पे मिल सकता है? ओके, so I mean that is again a very statistical question, but कोई भी आईआईटी में अगर सीएस जाना है तो आई वुड से जनरल रैंक अगर 25-30,000 के भी आसपास होती है फॉर पीडब्ल्यूडी. हाँ, सो दे कैन एंड अप गेटिंग प्रिटी गुड, मतलब दे कैन एंड अप गेटिंग सीएस इन कॉलेजेस. Is food really important if you're prepared? Not really. No, it's not. मैंने केमिस्ट्री कैसे पढ़ी थी? मैं तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा याद करती थी, और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में तो मैंने बहुत सारे बुक्स प्रैक्टिस करे थे. सो केमिस्ट्री के लिए बेसिकली यू सेट असाइड 3 hours पर डे एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट देमसेल्व्स. चैप्टर खत्म होने पर पीवाईक्यू करने चाहिए क्या? हाँ, यस ऑफ कोर्स करने चाहिए. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. Guys, please do not send one question again and again. वो spam हो रहा है. So, is IIT Kanpur worth for placements? I mean, of course. I mean, of course, it's worth for placement. मतलब any company which comes, it's obviously it's one of top 3 or 5 IIT. So obviously, any company, there are loads and loads of good companies go there. And if you are a very good student there, you will get an opportunity to present yourself in front of many companies. So yeah, IIT Kanpur is obviously one of the best for placements. No doubts there. लर्निंग पावर कैसे इंक्रीज करेगा? इट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग, लाइक स्टडीज की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, लर्निंग पावर कैसे बढ़े. इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. मतलब द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. सो लर्निंग पावर कैसे इंक्रीज करें? मैं अगेन डू मेडिटेशन, प्रैक्टिस. अगर लर्निंग में क्या होता है, आई मीन इन माय जेई टाइम्स व्हाट हैपेंड वाज सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर रियली ब्रिलियंट एंड हैड शार्प ब्रेन. तो जो चीज करने में मुझे 8 घंटे लगते थे, दे यूज्ड टू कंप्लीट इट इन 4 hours. तो अगर आपको कोई चीज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप ज्यादा टाइम दो. ठीक है, आप टाइम दो, देते जाओगे तभी जाके वो धीरे धीरे योर ब्रेन विल आल्सो बिकम शार्प एंड देन यू विल आल्सो रिक्वायर लेस टाइम. सो बेसिकली यू हैव टू डू इट. यू हैव टू प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस.
Are NITs worth it more than private institutions in general? In general, में now again, which NIT are we talking? Which branch are we talking? And which private institute are we talking? And which branch are we talking? That depends a lot. You know, this question is very subjective. Could you be more specific about the branches and which NIT and private college are we talking about? हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद PYQ करना चाहिए. Yes, Tejas. Okay, is IIT Kanpur chemical engineering worth for placements? Now, coming about placements, थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Many of the tech roles that you see are open only for CS, MNC, and electrical. But then again, many tech roles are open for other branches like EP and mechanical and chemicals as well. So, अगर आप बेसिकली आप अगर फॉर एग्जांपल केमिकल में हो, IIT कानपुर के केमिकल की बात हो रही है, तो या तो उसमें अगर आप हो तो आपको कोडिंग अलग से करनी पड़ेगी, आपको किसी कोर्स में नहीं कराया जाएगा, या तो आपको एक्स्ट्रा कोर्स लेने पड़ेंगे. बट हाँ, इफ यू लर्न कोडिंग एंड यू डू रियली वेल, आई हैव माय फ्रेंड्स इन अदर ब्रांचेस हु हैव cracked tech jobs and have done really well both in their internships also and in their PPOs also. So yes. 11 जेई एस्पिरेंट को क्या टिप दे? 11 जेई एस्पिरेंट के लिए द थिंग इज कि वन, देयर आर मेनी टिप्स, बट अगर एक टिप देना होगा इन जनरल तो मैं ये दूंगी कि प्लीज स्टार्टिंग से ही टेस्ट, मॉक टेस्ट दो. डोंट थिंक कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे. मॉक टेस्ट देने की आदत स्टार्टिंग से रखो. एंड द सेकंड थिंग विल बी, प्लीज मेक शेड्यूल्स एंड स्टडी. ऐसे डोंट गो रैंडमली कि अभी मन किया तो ये पढ़ लिया, अभी मन किया तो ये पढ़ लिया. वो मत करो. प्लीज मेक टारगेट्स, इफ नॉट डेली देन वीकली. Did you went to coaching or did you do it without coaching? I did not take any coaching till Eklavya. It was self study for me. How to deal with inorganic chemistry? Inorganic chemistry में I would say go in stages. पहले NCERT complete करो क्लास 11th और 12th की. उसके बाद फिर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो, क्योंकि मेंस में जो केमिस्ट्री पूछते हैं इनऑर्गेनिक वो completely NCERT से होती है. Once you are able to do that, then you can move to advanced literature like there's J. Dilly and there's OP Tandon and there's Singh. I followed Singh का inorganic. And after you do that, there's very good book which I think everybody should solve in inorganic, which is DK Jaspal. So वो solve कर लो and then you will be good. You will be able to crack advanced level problems in inorganic. 11th and 12th में सोशल लाइफ होनी चाहिए या नहीं? नाउ रैन, दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आई मीन मेरी नहीं थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. 10th तक आई वाज वेरी सोशल एंड आई वाज इन स्कूल एंड एवरीथिंग. सो या, बट 11th 12th में आई लिमिटेड माय सोशल सर्कल अ लॉट. नहीं थी मेरी सोशल लाइफ, बट देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर राइट नाउ इन माय कॉलेज एंड हु हैड अ वेरी एक्टिव लाइफ, एक्टिव सोशल लाइफ इन 11th एंड 12th. बट हाँ, इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिन्हें एक साथ मैनेज करने में दिक्कत होती है पढ़ाई एंड सोशल लाइफ, देन यू कैन give up your social life for 2 years. It is more than worth it. How much time do we give to each subject daily? PCM. Okay, now this depends on how much time you study. जितने भी पढ़ते हो उसमें इक्वल में बांट दो तीनों सब्जेक्ट में. अगर तीनों में से कोई एक्स्ट्रा वीक नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा वीक है तो गिव 50% टाइम टू दैट सब्जेक्ट एंड द अदर 50% टू द टू सब्जेक्ट्स. अदरवाइज डिवाइड इट इक्वली इनटू ऑल थ्री. मैं कितना देती थी? आई स्टडीड ऑलमोस्ट फॉर मे बी 9 to 10 hours. तो मैं 3 साढ़े 3 घंटे पर सब्जेक्ट देती थी. हाय मनोज, पुट योर नेम वेयर. जेई मेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने सवाल आते हैं? आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर, 30 से 35 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है. ऑल्सो जब बात यहाँ पे सोशल लाइफ की हो रही है 11th 12th में, तो वो तो आपका चॉइस है. बट यस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सोशल मीडिया पे कोई 11th 12th में ना रहे. इनफैक्ट अगर व्हाट्सएप भी आप यूज करते हो फॉर डाउट क्लियरिंग पर्पसेस एंड एवरीथिंग, ट्राई टू यूज एज मच एज पॉसिबल योर पेरेंट्स फोन और योर पेरेंट्स अकाउंट, नॉट योर ओन. And please, please, please do not use Instagram or Facebook in class 11th or 12th. फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें? फिजिक्स में आई कैन टेल यू देयर इज नो वन स्पेसिफिक वे, राइट? बट आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड. मैंने सबसे पहले HCV करा था, उसके बाद DC पांडे करा था, एंड देन आई सॉल्व नारायणा एंड वेदांतु के मॉड्यूल्स, राइट?
तो वो मैंने फिजिक्स वैसे करा था, बट देन अगेन दैट वाज माय वे, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर कोई लेक्चर सीरीज है या फिर अगर आपके कोचिंग में कुछ हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज प्रेफर दैट। फिजिक्स इज मोस्टली बेसिकली आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। दीदी, जे इज जे possible without coaching? Yes, it is. Nothing is impossible. But then again, you have to put in a lot more efforts. What's my branch? My branch is electrical engineering. I'm seeing a lot of repeated questions here. Oh my God, there's lots and lots of questions. I mean, now this is Mihir asked how to crack JEE in 4 months. JEE in 4 months crack करने के लिए, Mihir. Now, I uh, let's just start by saying कि सबसे पहले तो important topics organize करो. Check what are your strengths. अपने strengths पे focus करो. Important topics analyze करो कौन से हैं. उन important topics, और then अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए तो बाकी सब छोड़ो, प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो, उससे काफी सारे आइडियाज आपको लग जाएंगे. प्लीज सजेस्ट सम बुक्स फॉर व्हाट? जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई डिड पहले एनसीईआरटी, देन आई डिड अ फ्यू लेक्चर्स, एंड देन बुक विच इज रियली गुड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एम एस चौहान, both theory and the numerical book. So yes. मैथ्स के लिए अरिहंत सीरीज इज नाइस फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स. मेंस लेवल प्रॉब्लम के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आर डी शर्मा इज ओके. उसके बाद आप यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मैथ. Okay, the rank required for general category IIT CS girls, I guess around 350. It varies a lot from year to year. Not a lot, but yeah, it varies quite few. So I guess 300 to 350 is a safe zone, I would say. स्कूल और कोचिंग मैनेज नहीं हो रहा, हाउ व्हाई डू यू वांट टू मैनेज स्कूल एनीवे? आई मीन 12th की तैयारी 1 महीने में हो जाती है. यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट ऑल ईयर लॉन्ग. यू जस्ट हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यू हैव टू टेकन. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक बार इंजीनियरिंग लेके आते हो तो योर 12th का के मार्क्स डज नॉट मैटर एनीवेयर. एनीवेयर मीन्स एनीवेयर. सो स्कूल और कोचिंग में ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर कोचिंग. हाउ मेनी डेज वी शुड गो टू स्कूल इन अ वीक प्रिपेयरिंग फॉर जे? जिस दिन मस्ती करने का मन हो उस दिन स्कूल चले जाओ. Ranks required for general category IIT DCS girls 300 to 350. Sometimes it closes below 300 as well. For example, around 280. So that's it. Not उससे नीचे तो नहीं बंद होगा. Okay, which college and rank 500 CRL and rank 321 in OBC CGL? Okay, 500 common rank list. Then now basically you have to choose mainly between that. That is more or less my scenario. So yeah, you have to choose basically between IIT Roorkee Computer Science or IIT Delhi Electrical Engineering, right? Now, अगर आपका प्लेसमेंट ज्यादा फोकस, आई मीन यू वांट टू टेक गुड, मतलब बेटर जॉब इज योर ओनली टारगेट, go for CS, right? But if you want exposure and if you have some plan for higher studies or something, which I think people of this rank generally have, then you should come to Delhi Electrical. PYQs is enough for JEE mains. If you have limited time, yes. Otherwise, तो जितना practice करो उतनी अच्छी बात है. JEE mains is of 300 marks now, right? हाउ टू अटेम्प्ट जेई एडवांस क्वेश्चन. ओके, ये आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे एंड देन यू विल हैव टू सी कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. ठीक है, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आई यूज टू सॉल्व केमिस्ट्री फर्स्ट, देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स, राइट? विद ऑफ कोर्स आई वाज वेरी फ्लेक्सिबल कि अगर कोई एक सब्जेक्ट टफ है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए. बट या इन जनरल मेरा यही रहता था. दिस वाज माय
पैटर्न, एंड उसमें भी आई यूज टू फर्स्टली अटेम्प्ट द इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जहाँ पे जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, एंड देन द सिंगल करेक्ट वंस, एंड देन फाइनली द मल्टी करेक्ट वंस। और एक टाइम लिमिट रहता था, जैसे कि आई वाज लाइक कि केमिस्ट्री में शायद कुछ हो जाए, डू नॉट हैव टू गिव मोर देन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट बाद केमिस्ट्री पूरा हो या ना हो, आई यूज टू स्विच। ठीक है, स्विच टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच यू शुड ऑल्सो डू आई गेस। Okay, I'm seeing a few doubts on questions solve नहीं हो रहे हैं and things like that. So basically अगर question solve नहीं हो रहे हैं guys, so basically practice की कमी है या थ्योरी नहीं आती है। So अगर थ्योरी नहीं आती है तो फिर तो वापस से थ्योरी कवर करो, नहीं तो फिर it's just like you have to practice. There is no substitute to practice. अगर टफ वाले नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा नीचे से प्रैक्टिस स्टार्ट करो एंड देन इवेंचुअली गो टू द टफ वन। Which IIT I am from? I'm from IIT Delhi. जेई मेंस कितने मार्क्स की होती है? इट्स ऑफ 300। सेल्फ स्टडी टिप्स, प्लीज टारगेट बनाओ एंड देन फॉलो द टारगेट एंड स्विच ऑफ योर फोन्स व्हाइल स्टडीइंग। यस, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरू करो। स्टार्टिंग में अगर मन है तो फिर बहुत ज्यादा सोच लियो और फिर भी नहीं बन रहा तो सोल्यूशन देखो, बट देन एंड गोल शुड ऑलवेज बी कि क्वेश्चंस खुद से बने विदाउट checking solutions. Which NIT can I get in 180 marks in JEE mains? So basically, for this 180 marks in JEE mains, I think this is a very much dependent on which paper was it. I mean, basically, tell me your percentile so that I have more clear idea. Didi, modules are enough for JEE mains and advanced, and modules itna? Yes, yes, they are. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट दे सकते हो। दीदी, हाउ टू गेट 2 digit रैंक? मेरी नहीं थी नीलम, so I am not, I cannot honestly tell you how to get 2 digit rank. But yeah, I'm sure they practice a lot and they work really hard. How to perfect maths? I mean, maths में एक तो पहले formula should be on your fingertips. Concepts should be very clear. Concepts ज्यादा होते नहीं है maths में. And the last thing and most importantly is to solve a lot and lot of questions. Lots of questions. Okay. How to manage time? Manage time means पढ़ाई के अलावा और काम क्या था? Is my question. I mean, study is the single most important thing in class 11th and 12th. So I don't think time management should be an issue. जितना time है खाने सोने के अलावा, give it to studying. IIT Roorkee CS girls general rank required. Okay. IIT Roorkee CS girls general rank required. So boys rank generally close at 500. So I would say girls rank would approximately close near about 1500. प्लस माइनस 200 रैंक कर लो, माइनस ही करो, प्लस तो मत करो। यस। हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन मॉक टेस्ट? सी, to improve your score, this is actually a good question. Divide your mistakes. I used to categorize my mistakes into a few buckets, either lack of revision, or lack of practice, lack of knowledge, or lack of time.
ठीक है, एंड अगर इन चारों में से किसमें देखो कि कौन से बकेट में कितने मार्क्स जा रहे हैं, एंड देन इफ इट्स लैक ऑफ टाइम जिसमें सबसे ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, विच मीन्स कि आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लैक ऑफ नॉलेज, इसका मतलब आपके थ्योरी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो देखो कि क्या थ्योरी थी उस क्वेश्चन की और वो थ्योरी वापस से कवर करो, राइट। सो इस तरह से यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर एग्जाम इन मॉक टेस्ट। Should I solve reference books on modules only? Neelam, now the thing is कि modules के बाद अगर time मिलता है तो you can solve the reference books, no problem. अगर time नहीं मिलता है तो modules और also अगर अच्छे से लगा लो तो enough, you can go to the mock test then. Is DC Pandey enough for JEE Advanced? I mean, you can crack JEE Advanced if you have done DC Pandey nicely. But अगर time है तो you should always go ahead to solve higher level materials after DC Pandey. एक चैप्टर के मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? आई मीन अब देखो, अब तुम अगर मैं बोलूं 100 और तुम 100 इजी क्वेश्चंस लगा लिए एकदम 1 + 2 = 3 टाइप के, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, राइट। आई मीन कितने क्वेश्चंस करने चाहिए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए, यू नो। तो द लेवल शुड बी इजी, देन मीडियम एंड देन टफ। इस टाइप के होने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट मैटर, आपको जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, आपकी जब तक थ्योरी पार्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक आप ऐसे फिर प्रॉब्लम्स देखो, बहुत अच्छा तरीका है टू जज इफ यू आर वेल वर्स्ड विद एनी चैप्टर, उसके पीवाईक्यूज लगा लो। अगर पीवाईक्यूज बन रहे हैं विद इन टाइम लिमिट, इसका मतलब यू आर वेल वर्स्ड विद दैट चैप्टर। कुछ लोग 10 प्रॉब्लम्स बनाने के बाद ही एकदम सेट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे 150 के बाद भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट मैटर। I got 38 out of 14 exam. Which exam, Kshitij? That is a very good score, by the way, whichever exam that was. IIT Delhi General CS rank required. For guys, it is around 100 to 120 for 4 year CS program in IIT Delhi. How to cover theory quickly? There is no way to cover theory quickly, and honestly speaking, you should not cover theory quickly. You should give it the time it requires. Which is best, Disha publication versus Arihant? I have no clue, to be very honest, but I followed Arihant for maths, and it was a very good book. It was a little tough, but it was good book. Is NIT Trichy good for North Indians? Yes, yes, it is. Undoubtedly, it is. How to do revision effectively? जब first time पढ़ो ना तो you underline important things with pencil. Then जब next time पढ़ो तो फिर read the underline with pencil and then underline it further with pen. And then use sketch pens in subsequent readings. So ऐसे करके हर बारी जब रिवीजन करोगे तो you will लास्ट में ऐसा होगा कि पूरी बुक में बस 5 से 6 लाइंस अंडरलाइन होंगी. I am now in which company? I am in third year. Yes, I am not doing job right now. How was my class 11th? I'll be very honest with you. It was a disaster. Yeah. I mean, I lost a lot of pace in class 11. Probably I could not, it was very overwhelming, everything at one point. And also the decision of self-study, it was, quite overwhelming. So 11th was very rough for me, like a very big roller coaster. Uh, it highs and lows. But with 12th, mein aake things were stable and then I studied. So yes. What was my AIR and my branch? My AIR was 1226 and my branch is electrical engineering at IIT Delhi.
स्कूल प्लस कोचिंग प्लस अदर वर्क्स प्लस डीपीपीज, हाउ टू मैनेज आवर रिविजन। रिविजन के लिए गिव वन डे ना, मतलब संडे को रिवाइज कर लो। ठीक है, जिस दिन स्कूल भी नहीं होती, कोचिंग भी नहीं होती, बाकी काम भी क्या ही होते होंगे, सो जस्ट रिवाइज ऑन संडेज। ऑल्सो जब भी कोई टेस्ट हो ना, तो टेस्ट लेने जब बैठो तो उसका सारा कंटेंट रिवाइज करके बैठो, सो रिविजन अपने आप हो जाएगा। इज इट रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज थिंग्स rather than keep memory? Yes, because एक पॉइंट से ज्यादा यू कैन नॉट मेमोराइज थिंग्स, राइट। हाउ टू कवर बैकलॉग्स क्विकली। क्विकली क्या होता है? आई I मीन ऊपर ऊपर से कवर करने का तो मतलब है नहीं, राइट। बट हाँ, बैकलॉग्स कवर करने के लिए एज आई सेड, डेडिकेट योर वीकेंड्स फॉर रिविजन्स एंड बैकलॉग्स एंड प्रॉपर रूटीन बनाओ, ताकि पता चले कि इस वीकेंड ये कवर करना है, इस वीकेंड ये कवर करना है, ताकि चीजें हो जाए। रिविजन बुक्स की नोट्स की, राइट। राइट, रिविजन बुक्स एंड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई फॉलोड अरिहंत के रिविजन नोट्स विच वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। He asks how to become consistent. How to become consistent? Okay. So now उसको छोड़ के मैं how to become consistent में again you have to form daily targets and study, right? So that is it. Okay, I have a lot of questions about counseling now. So guys, preparation strategy को छोड़ के अब मैं थोड़ा focus counseling पे करती हूँ, है ना? तो I'll just थोड़ा सा get over there. Please tell us about IIT Delhi. I might be getting materials in IIT Delhi. Okay, so let me tell you, IIT Delhi का जितना hype है like about the college, उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए is what I feel. I mean, it has an amazing campus life. You have, I mean, it's something which cannot be it cannot be expressed in words. It can only be felt as a feeling. सो आईआईटी दिल्ली में फर्स्टली यू विल गेट ग्रेट फ्रेंड्स ओवर हियर, बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल बनेगी। सेकेंड थिंग इज दैट यू विल गेट एक्सपोज टू इतना ज्यादा, यू विल गेट सो मच अपॉर्चुनिटीज, बी इट इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स और इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आई मीन, नेम द थिंग एंड यू हैव अ क्लब। डिबेटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, everything, each and everything has a club over here. You make racing cars and everything, you astronomy club, stargazing, well, there's lots and lots of clubs. So and the campus life is amazing. I mean, uh, आईआईटी में जनरली होता ये है कि सुबह लोग क्लासेस करते हैं, सो आईआईटी नेवर स्लीप्स। रात में लोग ऐसे घूमने फिरने निकलते हैं, मस्ती करने निकलते हैं। सो या, that is it. So I mean, the campus, and then again we have so many fests and festivals and everything. So RDV में इतना enjoy करते हैं, and then there's every day there's something or else going on. So हाँ, बहुत ज्यादा काम रहता है undoubtedly, बहुत पढ़ना होता है and everything, but it's amazing overall. प्लीज सीएस के लिए आईआईटी गांधीनगर, धनबाद, पटना, भुवनेश्वर का क्या ऑर्डर होना चाहिए? धनबाद फर्स्ट, ठीक है। IIT ISM, आई एम फ्रॉम धनबाद बाय द वे, या। सो IIT ISM धनबाद एट नंबर वन, एंड देन मे बी वी हैव गांधीनगर, आई IIT, एक्सक्यूज मी, आईआईटी में सीएस के लिए गांधीनगर, धनबाद, पटना, भुवनेश्वर ऑर्डर। पटना, भुवनेश्वर, धनबाद, गांधीनगर। धनबाद शुड बी एट नंबर वन। गांधीनगर, राइट। धनबाद, गांधीनगर, भुवनेश्वर एंड पटना। यस, धनबाद, गांधीनगर, भुवनेश्वर एंड देन पटना। आईआईटी मांडी एआई एंड डेटा साइंस वर्सेस आईआईटी रोपर इलेक्ट्रिकल। रोपर इलेक्ट्रिकल, रोपर इलेक्ट्रिकल, yes, because basically I'm going by a brand name इधर पूरा। and AI and data science में you will be narrowing your career at a very initial stage। आप अभी गए भी नहीं हो कॉलेज and you have decided कि आपको artificial intelligence और data science में ही घुसना है, so I wouldn't suggest that। so I would say roper electrical, it will keep you more open। धनबाद, then गांधीनगर, then भुवनेश्वर, then पटना, yes, okay।
Bombay metallurgy or Kanpur or Roorkee chemical? What is your future goal? I mean, do you have, if you have to appear for placements, go for Kanpur or Roorkee chemical. IIT Delhi civil or chemical engineering or chemical dual. Could you say that older sister, I'll prepare for UPSC parallelly. Acha, you have to prepare for UPSC, then take IIT Delhi civil, I would say. My main name is MBA, Chem BS Bombay versus Textile Delhi. Uh, your main name is MBA. You have to decide between chemistry BS Bombay or textile Delhi. To be very honest, won't matter. Both of the colleges have very good brand names and the branches are almost equivalent. So maybe come to textile Delhi, I would say. I'm confused between civil and chemical because some are saying that chemical will have more free time in school and some are saying civil. I would say civil, especially if we are talking about IIT Delhi. Yeah, your questions were not visible back then. They are visible now. I'm so sorry for that. I had another link. So I was answering other questions. IIT BHU mining versus chemical in NIT Jaipur, NIT Surat. Okay, now mining is what I would say. अगर mining में interest है to take mining, otherwise things can get really dicey for you, right? In comparison to that, chemical is more, uh, will give you more opportunities, is what I would say. CS at IIT Ropar versus electrical at IIT Kanpur. Electrical at IIT Kanpur. Time In is one go, electrical at IIT Kanpur without any doubt. अब है. My main is MBA. Main name is MBA. Okay. Which is best way to revise 11th and when to? Okay, I'll miss this question right now. अभी counseling questions पे focus करते हैं. Can we do MS in computer science after civil engineering in IIT? Which IIT? First of all, and second thing is it's very tough. You know, you'll have. I mean, बोलने में आसान लगता है, but it's actually very tough to switch branches. That too from civil to uh, computer science. I'm SC female and SC cat rank is category rank is 265. What are the branches I can get in IIT Delhi? I would say, I mean, I'm not very sure about this. You'll have to check the cutoffs for last year. But I'm sure you will get something pretty good with this SC category rank in female category. IIT BHU electrical girls at what rank? जो normal जो general category BHU electrical की girls की होती है BHU electrical की general rank उसको into 3.5 कर दो. That would give you electrical girls. I mean, I know for CS as a matter of fact it is approximately the rank required is 900. Yeah, 900 to 1000. So electrical, I'm assuming it would be 2000 say 2500. So I guess around uh, 5 to 6000 girls normal category rank would give you electricals. Does IIT Delhi has you IIT Delhi has UPSC prep involvement. Whatever you want to search, you can get at IIT Delhi. I mean, you'll always find a group dedicated to the preparation of UPSC. It's just that you have to find them. IIT Bombay, BS and IIT Delhi. I want to be in IT sector. You have to be in IT sector. IIT Bombay, BS, IIT Delhi textile at IIT Delhi because it's a BTech degree. If you want to join IT sector. Otherwise, if you really want to join IT sector in placement, I think you should consider other colleges with branches which are more tech aligned. But among these two, IIT Delhi textile. Okay. So any more counseling related questions? I'm sorry guys, I did not have this link. Otherwise, I would have addressed these questions first because it's more important as of now. But yes, anyways, any more counseling related question, guys? No? Okay. So should I get back to the doubts there?
which IIT is best as according to me, which IIT is best? That's very tricky, but I would obviously take my IIT's name, IIT Delhi. What is the cutoff for OBC at IIT Bombay CSE? Okay, 400. Yeah, 400 is the OBC cutoff for IIT Bombay Computer Science. IIT Kanpur, best branch cutoff, that is CS at IIT Kanpur, 150 to 200. What is the cutoff for OBC IIT Bombay CSE? 400. BTech BSc, which is best for UPSC? Which branch is best for UPSC? I mean, branches like civil and chemical is what most people consider for UPSC, especially civil. My branch in IIT Delhi is electrical. Which IIT is best for you? Again, I would say my college, that is IIT Delhi, but IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, Kanpur, everything is equally good. I mean, students should be the one laboring hard. इलेवन टफ लग रहा है in comparison to 10th क्योंकि है tough. I mean, there's no comparison between class 10th and 11th. What should you do? You should not get, you should understand that you're not alone. Everybody finds 11th much more difficult. What should I practice in class 9 most to crack IIT? Class 9, I would say, I mean, एक class ऊपर के book solve करो is what I would say. Class 9 is very early. I'm in class 10. What will you suggest me? पहले तो give important competitions like, NSEC and NSEJS and NTSC and everything so that you realize where you are right now. And हो सके तो आगे के topics cover करो. Focus on that. Mains के लिए कौन सा book? Mains के लिए previous year NCERT for chemistry, maths के लिए RD शर्मा, physics के लिए HC वर्मा and DC पांडे का level 1 should suffice. Okay, yeah, I have some questions over here. I'm also getting MNIT Allahabad CSC. Okay. IIT Delhi Textile versus IIT Dhanbad EC versus CS BIT Misra. What is your final target? If your final target is placement, go for Dhanbad EC. Then CS at Misra and then Delhi Textile. In fact, prefer Dhanbad ka EC. I would say it's the best option for you if you have to consider placement. What is best way to revise 11th and when to revise 11th? Best way to revise 11th is through short notes. And if you want, I bought Arihant का revision booklet, that book, note. हाँ, तो उससे मैंने revise करा था. Can you tell the difference between CS and MNC? CS is computer science, MNC is mathematics and computing. MNC में maths पे focus ज़्यादा होता है, like probability and stochastic processes and a few more topics of that. दोनों के काफी सारे courses same भी होते हैं, undoubtedly. And most of the companies which are open for CS are open for MNC as well. MNC में you also, if अगर आपको maths वगैरह में interest है, so you can always choose MNC. My branch is electrical engineering. जेई मेंस 2 लाख में कॉलेज मिलेगा. आई डू नॉट रियली हैव एनी आइडिया. आईआईटी जी एमएनसी बीटेक वर्सेस आईआईटी केजीपी एमएनसी. अगर ब्रांच सेम है एंड यू हैव द कॉलेज प्रेफरेंस बिटवीन आईआईटी जी एंड आईआईटी केजीपी, गो फॉर आईआईटी केजीपी. बीटेक डीएस वोंट मैटर मच. दीदी की प्रिपरेटरी कोर्स यस लेना चाहिए, उससे एक डायरेक्शन मिल जाता है. एमबीए टारगेट है तो आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल फॉर श्योर वर्सेस आईआईटी धनबाद डीसी वर्सेस सीएस मिश्रा. एमबीए अगर टारगेट है तो दिल्ली टेक्सटाइल प्लीज.
I said ना, अगर MBA preference है तो college का brand name will matter more. अगर placement preference है तो your branch will matter more. Right. Any more doubts related to counseling, guys? I'll take doubts for 2 more minutes before concluding the session. तो अगर कोई counseling related doubts है तो please ask me. इलेक्ट्रिकल ब्रांच हार्ड कहते हैं, सच है क्या? आई मीन एनी ब्रांच इज हार्ड, पढ़ना तो पड़ेगा, बट हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड CS ब्रांचेस आर पर्टिकुलरली रियली टफ इन टर्म्स ऑफ in terms of you have to study a lot, core और टेक दोनों मैनेज करना पड़ता है, so yes. Okay. uh MNIT Allahabad, good. I mean, good is a very relative term, don't you think so, Abdullah Umar? So good in comparison to what? I mean, it's undoubtedly good. It's really good. But then again, in what terms are we talking? Which IIT would you prefer as a 12th student preparing for JEE, both mains and advanced? Which IIT would I always kept my target to be either IIT B or IIT D. So Bombay or Delhi. I'm getting a lot of questions about backlogs. Guys, अगर backlogs है तो you will have to, make your targets on weekends and then cover the backlogs. हाँ, I have more counseling related doubts. Okay, IIT Kanpur Electrical versus KGP MNC. Now that is the same dilemma which my brother faced, and we, did a lot of research for this. But he went to Kanpur ka Electrical. And I would say Kanpur Electrical versus KGP MNC में मैं last में यही बोल दूंगी कि the choices are so close कि 5 साल बाद it won't matter what you take. Whatever you get at one place, you get at another place. तो देखो कि घर से कौन सा ज्यादा पास है, एंड देखो कि किसके आसपास ज्यादा अच्छे घूमने वाले एरियाज है, एंड टेक दैट कॉलेज. बोथ आर द सेम, सेम एक्चुअली सेम. IIT के BS फिजिक्स वर्सेस IIT D टेक्सटाइल. हाँ, ओके, आई वुड से IIT D टेक्सटाइल. नो, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नॉट, पुनीता. Which is the easiest branch? I really don't know. I mean, किसी भी branch को easy बोलना, I wouldn't do that. Which is better, AI and DS or CSE at new IITs? I would say CSE and new IITs. देखो, AI और data science लेने में the problem is कि you aren't even into college and you have thought कि तुम्हारा पूरा career will be based on artificial intelligence and data science, which won't be a very good thing to do. So go for CSE, you will be open for more opportunities. Is Delhi textile better than biotech from MBA and job point of view? Not really, both are the same. How to develop speaking skill like you at IIT? एक बार IIT आओ, अपने आप हो जाएगा. What is BS in economics? BS in economics is actually a very nice thing. People should consider it if they are getting it. Okay, any more counseling related doubt, guys? जल्दी जल्दी बताओ. Uh, no? Okay. So with this, guys, it was really lovely talking to you. And it was a great session, I would say. Which IIT college is the best? It depends on you, which is the best. NIRF rankings check kar lo, but Bombay, Delhi, Madras,
All three are at equal, Kanpur and KGP next. Job point of view से no Punita. IIT भी environmental 5 year versus IIT textile, IIT textile. आके ब्रांच चेंज के लिए कोशिश कर सकते हो, of course. Should I consider itna and itna? No, not. These CS and IIT Gandhinagar, Bhubaneswar, Dhanbad, Patna. Which to prefer? Dhanbad. IIT Dhanbad CS should be preferred of these choices, and then Gandhinagar. No, not really. Should people consider 5 year degree instead of 4? No. अगर 4 year मिल रहा है तो better go for 4. बाद में मन करेगा तो you can always do MTech or MS. So are we good to go now, guys? IITB chemical versus IITM chemical. बॉम्बे या मद्रास में से chemical, बॉम्बे chemical. But if you are South Indian, or if you live close to Madras, you can go for Madras chemical. I mean, both are the same again. तो फिर other factors consider करो. घर से ज्यादा पास कौन सा है, कहाँ पे ज्यादा मजा आएगा घूमने फिरने में. Yeah. Okay. So now are we good to go? Okay. So thank you so much for joining me today, guys. It was lovely chatting with you, and I wish you all the very best for your counseling. और अगर कोई IIT Delhi आता है, whichever branch you take, make it a point to meet me, reach me out, and then I can show you around the campus and I can tell you a lot of things. Are ITD professors good for first year to change branch? Branch change, DEPC, which we call it over here, department change, is a very difficult and ambitious thing, right? And to be very honest, professors have little to do with it. This depends on the labor of the child. Okay. So with this, I bring my session to conclusion. It was really nice talking to you guys. Thank you so much for joining me with so much of enthusiasm. And I wish to see you all again. And I hope you get the college and the branch that you desire and you do really, really well in life. So thank you so much, guys. Thank you. Have a great evening ahead and all the best for your counseling process. Thank you. Bye bye.